So good morning all. Good morning, We sir. are we are in 55th lecture, 56th lecture, sorry, even of data structures and algorithm, and we are learning tree. In last lecture, I have started the operations on the binary search tree, इंसर्शन एंड डिलीशन हो like गया था. insertion and deletion. Insertion we have done, deletion हम कर रहे थे. So Yes let me sir. share my screen. So and let me know is it visible to all or not, so that I can start now. It is visible sir. So deletion, insertion we have done, algorithm हमने देख ली थी, and now we have started deletion. We have seen that there are three different cases of the deletion. Case one, where the node is of 0 degree. Case two, where the node is of 1 degree. It means it may have either right child or left child. In that case, we simply replace the node with the child and we remove the child pointer from the original position. In case three, the node will be having 2 degree. It means it will have two children. So it may be a root node also. So in this, we need to find out the in order successor of that node, and we will replace the node with the in order successor. Okay, and then finally we will remove the in order successor from the original position. So we will swap actually. So you can write over there replace, and we can also use the word swap over there. Swap the node with the in order successor. After swapping, the node will be at the in order successor position, and in order successor will be at the node position. Okay, now we will see how it works actually. So case one we have seen, I think, and case one algorithm also we have seen. Is there any issue in that? For an example, suppose 4 we need to delete, so simply it is as a leaf node, so we can delete it simply by making by replacing the pointer in the parent node by null. Like 6 is the point, 6 is the parent of 4. So as 4 is the left child, so we will make left pointer of 6 as null. Is it okay? It is okay sir. That is what we have done in the algorithm also. So in algorithm we have written if x left is null and right is null, it means it is if the node has no child, both the pointers are null. So x is the node which is going to be deleted. Okay, so 4 is x in that case. So दोनों के pointer दोनों left और right null है, it means it's a leaf node. So now we will check the parent right. If x is parent right, then we will make the right null. Otherwise, we will make the left null. Now, finally, we will delete the x node. Now, case two will be the node x to be deleted, and it has one child. Like in this example, you can see that it is 6. Suppose I am going to delete, which has only one child. So 7 is the child, only child of the 6. So I need to delete 7 now. So I need to check the parent of 6. In this case, x is 6. Algorithm के according हम देखें तो x is 6. Now x is left is null, but right is not null. It means for this example, it is true. So right is not null, but left is null. So now we will check the location of 6 with respect to the parent. Parent का यदि right है तो उसका child भी right बन जाएगा. यदि उसका parent का left है तो वो child भी left बन जाएगा. Okay. Similarly, the case to B is there where the child is one only, but it is a left child. So we can consider that left child example also. Say 5 is there instead of 6. Okay. हम इसी example में थोड़ा सा modification करके देख सकते हैं. If 5 is there, suppose, so 5 can also be deleted. Okay. With the same, with the second algorithm actually. Okay. So 5 suppose यहाँ पर आता है, तो इसको delete कर सकते हैं हम लोग with the help of this second example. Okay. So that is same as that of the first one. Now coming on to the last one, where the children has the 2, where the node has 2 childs. It means x has 2 child. Take this example. Maybe some issues there. Let me restart the presentation. So this is deletion case number 3, where we have 2 childs of a node. Suppose 12 is to be deleted. I have marked it red.
12 is to be deleted. Is it visible to all now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 12 needs to be deleted. Okay, so which has two child that are 9 and 12. So in last class I have discussed that in that case what we need to do is we need to find the in order successor of that node. And in order successor कैसे identify करेंगे हम लोग? Can anybody tell me? In order So successor is it will be the next element of the in order traversal traversal. Yes. of that tree. So we will find the in order traversal of that tree. Okay. Now tell me in binary search tree in order traversal is like can anybody tell me what is in order successor? Property of in order traversal. So left root and Left right. root and Left right. root or That is right. okay, but I am talking about specifically for Sir, it the is sorted in it is ascending sorted. order. Very good. Sorted. If for BST it is sorted. Okay. Or one more thing I have written, I think it has been deleted. Okay, so that is in order successor is equals to leftmost child in the right subtree. Is it okay? That we have seen also in the previous class. Yes or no? Okay, sir. In order successor will always be the leftmost child in the right subtree. Now tell me, like suppose in order successor I am talking about. So in this tree, say in order will be 1, 2, 5, 7, 9, 12. This is a sorted sequence 1, 2, 5, 7, 9, 12. Is it okay? Yes. So 1, 2, 7, 5. just observe it. One more thing I want to convey. So आपके लिए थोड़ा easy हो सकता है ये समझना. In order successor क्या होगा इसमें? Like 9. for 7, suppose I am talking about so 7. The right subtree is 9. 9, 14. This one is the right subtree. Okay. And in this right subtree, the leftmost node is 9. 9. एक चीज तो एक तरीका तो ये है आइडेंटिफाई करने का लाइक सपोज समवन इज गोइंग टू बी गेटिंग कंफ्यूज इन द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री देन व्हाट वी कैन डू इज we can find the smallest node in the right subtree. Please keep that thing in mind. Smallest node, smallest value in the right subtree. Observe it. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. It is Yes. much better. Leftmost will be smallest node, or we can say smallest node in the right subtree. Smallest value you can also say. डेफिनेटली यदि हम ऑब्जर्व करें सो लेफ्ट मोस्ट जो नोड होगी वो सबसे छोटी होगी क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में लेफ्ट आता है फिर नोड एंड देन राइट आता है तो लेफ्ट मोस्ट नोड सबसे पहले आ रही है ओके सो लेफ्ट सबसे छोटी जो नोड है सबसे पहले आएगी एक्चुअली आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस केस में किसी भी सब ट्री में देखिए आप लाइक Yes, सपोज यू sir. जस्ट 1 आ रही ऑब्जर्व है. इट अब you observe that in that subtree 1 to 5 okay which one is the smallest node 1 1. and ये सबसे लेफ्ट मोस्ट है Far similarly left. in this whole tree 1 2 7 5 9 14 leftmost node कौन सी है 1 and which is the smallest one so in order में हमेशा leftmost node smallest one ही होगी किसी भी ट्री के आप देखेंगे तो ये एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का आपका in order successor so in order successor will be either leftmost child of the right subtree or it will be the smallest node or value in the right subtree. Is it okay now? So you can tell me easily in that what will be the in order successor 12 in this case. 9. 9. Very bad. Why? 21. 21. Very bad. 25. इतना समझाने के बाद भी ये हाल है तो what? Read 25. that condition. Read their condition. In order successor will be the leftmost child in the right 19, subtree. 19. Right 19. subtree is what is the right subtree of this? 12. 19, 21 and 25. हाँ इसमें leftmost node कौन सी है? 19. 90. 19. Smallest node कौन सी है? 19. 19. तो दो चीजें बताने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द इन ऑर्डर सक्सेसर इससे ज्यादा तो शायद कोई नहीं बताएगा बच्चे इन ऑर्डर सक्सेसर इज द नोड स्मॉलेस्ट नोड at the right hand side subtree of that particular node. Is it okay now? Any doubt till now?
नो सर. So what we need to do is now, we will first of all find the in-order successor, and that is 19 in this case. Okay. Now what we will do, we will replace the value of the node that is to be related with the in-order successor. So 12 को हमने किससे replace किया? 19 से. 19 से. Okay. Now 12 has been replaced. Now 19 node can be deleted. 19 node can be deleted by which case? Tell me. Left child of 21 will be null. Two, Case, second which case, A. which case we one. will? Case 2. Case 2. Sorry, it will be Case case 1, 1. sir. Case 1. Very good, very good. 19 we need to delete now. 19 means red 19 we need to delete. Red 19 we need to delete. And red 19 is a node which has no child. So this is case 1. Case 1 with degree 0 node. Case 1. So it can be deleted directly. We can make the left child of 21 will be null. So after this replacement, once we replace the node with the in-order successor, definitely it will belongs to either case 1 or case 2. Okay, so you need to follow the case 1 or case 2 in order to delete the node now, because 19 has already been replaced. 19 की value हम 12 की जगह लिख चुके हैं. So now 19 needs to be deleted. So in this way, this will be the final tree for me. Is it okay? Sir, if we have replaced 12 with 19, then and we are deleting Actually, this 19 will be 12. Actually, this will be 12. Actually, make it 12. which 19, sir? We have actually swapped, na? Yes, we have sir. swapped the value. We have 12 with swapped 19. the values of 19. Like first of all, we have replaced 12 by 19. Then 19 will be replaced by 12, and then 12 will be deleted by the case number 1. Is it okay now? ये clear है. Logic is clear to all. For fast, we need to be fast. Actually, we have very less time now, so we have to be fast. So is it okay? Logic is okay. You need to respond in fast also. Yes, sir. Okay, so now we Yes, are going to sir. write the algorithm now. Again, we need to take 2 pointers actually. What we will take first parent. Parent and child. हम parent लेंगे. Okay, let us suppose this is a node X. Okay, and we will find the in order successor of X. Okay, and हम suppose करते हैं कि X successor जो है वो हमारा in order successor है. X the node will be deleted and XS will be the in order successor of X. So how we will find that one actually? First of all हम क्या करेंगे? Parent बना लेते हैं. दो पॉइंटर तो लेने ही पड़ेंगे हमको. So parent हम बना लेंगे इसको. Okay, and then हम इसके right child को X के right child को in order successor X successor बनाएंगे. X का right. ओके, सो ये मेरा एक्स सक्सेसर बन जाएगा. एक्स सक्सेसर क्या होगा? एक्स का राइट. राइट क्यों होगा ये समझ में आता है सबको? बिकॉज वी हैव टू सर्च इनटू द राइट सब ट्री ऑफ एक्स. इन ऑर्डर सक्सेसर विल ऑलवेज बी इन द राइट सब ट्री ऑफ एक्स. सो वी विल मेक एक्स एज एक्स राइट. सर एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो. सर आपने कहा था कि इन ऑर्डर में मोस्ट लेफ्ट चाइल्ड देखना है, तो इसमें तो सर 12 के बाद 9 आ रहा है लेफ्ट, और उसके बाद कोई. मैंने ये भी बोला था कि इन ऑर्डर में लास्ट देखना है, साथ में राइट सब ट्री में देखना है बेटा. इसका राइट सब ट्री में देखो ना आप, इसके लेफ्ट सब ट्री में क्यों जा रहे हो आप? हाँ, राइट सब ट्री में है राइट सब ट्री के एग्जिस्ट कर रहा है. सो व्हाट वी विल डू इज, हमने इसको एक्स पेरेंट बना दिया और इसको एक्स सक्सेसर बना दिया. इज इट ओके? नाउ वी विल मूव इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्री, राइट सब ट्री. सो हम क्या करेंगे, एक अब व्हाइल लूप लगाएंगे टिल एक्स सक्सेसर इज नॉट नल. जब एक्स सक्सेसर नल होगा तो पेरेंट कहाँ होगा बताइए? Just before that means 19. 19 पर आएगा. सो हम यहाँ पर आ चुके होंगे एक्चुअली इस नोड के बाद. तो मेरा पेरेंट तो ये होगा और एक्स जो है वो मेरा नल हो चुका होगा.
एक्स सक्सेसर सॉरी, है ना। तो एक्स सक्सेसर नल एंड पेरेंट 19 पे होगा। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स को और एक्स जो भी ये नोड है हमारी पेरेंट वाली, इसकी वैल्यूज को हम आपस में स्वैप करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए एल्गोरिथम हमने यहाँ लिखी है। The condition is when x left not null and x right not null. It means it is the node with two child. So x left not null and x right not null. Is it okay? First thing is that, is it okay? We are going to delete. We are going to delete the node for which the left and right both childs are not null, like 12. So x is the node which is to be deleted. Left point left child, right points to right child. Information that store the information part, because we will actually swap the information also. Root is that. Okay, so we are starting with the node x जो हमें delete करनी है, जिसके दोनों pointers null नहीं है, दोनों left और right pointer null नहीं है. So we have made the parent x. जैसे मैंने बताया आपको, हमने parent को क्या बनाया है, x, and x successor को x right बनाया है. Is it okay? That two steps. First of all, we need to start or initiate this way. Now repeat while x successor left is not null. X successor left is not null. Okay. So 19 पर पहुंचने पर तक हम इसको मूव कर रहे हैं. So ultimately parent is equals to, इसमें हमने वापस से चेंज किया, लाइक पेरेंट क्या हो जाएगा, पेरेंट यहाँ आ जाएगा 21 पे, और एक्स सक्सेसर यहाँ आ जाएगा. ओके, एंड देन हम वी आर चेकिंग कि एक्स सक्सेसर का लेफ्ट नल हो चुका है ना. तो एक्स सक्सेसर का लेफ्ट जैसे नल हुआ, यहाँ पर हमने देखा इस सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पर आए हम लोग, मान लीजिए दिस इज पेरेंट नाउ एंड दिस इज एक्स सक्सेसर. तो एक्स सक्सेसर लेफ्ट इज नल, तो वी विल मूव आउट फ्रॉम द लूप. लूप बंद हो गया है. और नाउ अब इस केस में क्या करेंगे, जो एक्स है हमारा, ऑलरेडी एक्स तो यही है, एक्स तो चेंज किया ही नहीं हमने, एक्स का और एक्स सक्सेसर की इंफॉर्मेशन को हम आपस में चेंज कर लेंगे. सो एक्स सक्सेसर इंफॉर्मेशन बिकम्स विल होल्ड एक्चुअली एक्स सक्सेसर इंफॉर्मेशन. तो यहाँ 19 आ गया. अब आपने देखा 12 की जगह क्या आ गया है, 19 आ गया. ये वैल्यू में कॉपी हो गई, एंड एक्स जो है वो क्या बन गया मेरे पास, एक्स सक्सेसर बन गया. तो एक्स अब मेरे पास ये हो गया नोड जो हमें डिलीट करनी है. फाइनली डिलीट द नोड एक्स. It could be likewise also कि x information, x successor information, sorry, x successor information is equals to x information. ऐसा भी कर सकते हैं. जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम स्वैप करें, ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना स्वैपिंग के भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं. डायरेक्टली हमने 12 की जगह 19 रिप्लेस तो कर ही दिया है, और 19 यदि यहाँ होगा तो डिलीट कर देंगे डायरेक्टली, तो वो भी चलेगा केस में. 12 ही यहाँ है, डिलीट, दोनों ही तरीके से ठीक है. इज इट ओके नाउ? This is very simple algorithm for the deletion of the node which has two child. सर यहाँ से फोर्थ पॉइंट भी समझा देना सर, ये कुछ समझ में नहीं आया. एक्स का वैल्यू चेंज की हमने, 12 की जगह 19 कैसे आएगा बच्चे, वो हमने किया है यहाँ पर. स्वैपिंग के जरिए. स्वैपिंग नहीं, बस हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर. स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, स्वैपिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन हमने इसको रिप्लेस कर दिया सिंपल. 12 की जगह यदि 19 लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चे, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू x सक्सेसर की वैल्यू. x की इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू x सक्सेसर की इंफॉर्मेशन. तो 12 विल बी रिप्लेस्ड बाय 19, सिंपल. ओके सर, है ना. और x पॉइंटर अब हमने चेंज कर दिया, यहाँ लिया है, x को हम नीचे लिया है. तो आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू वी विल चेंज द पॉइंटर आल्सो. तो x इज नाउ पॉइंटिंग टू 19, सो x कैन बी डिलीटेड डायरेक्टली. अब एक्स पेरेंट्स बन गया. ओ 19 पेरेंट्स बन गया. अब उसको हम डिलीट कर सकते हैं x को, आइदर यूजिंग केस 1 और केस 2. इज इट ओके नाउ? ओके सर. Anyone else has any question? Sir, Yes. sir, why we are setting x as x successor in step 5? We are setting as Sir, I am not getting the step 5. step 5 is the loop. No, sir. After that 5, 4 and 5, 6, 7. The Sir, the नीचे third से- last Sorry, step. sequencing is नीचे wrong. से। 1 2 3 4 5 है ना, sequencing गलत हो गई है. Just a minute, let me like first clear the sequencing of that. Correct. One, 4, 5. This one you are talking about? No, sir. After this step. This one. Yes sir. 7 step. Now you are talking about 7 step. Yes, sir. So 7 step is x is okay.
7th स्टेप इज लाइक बटा जब लाइक हम क्या कर रहे हैं, अब नोट कौन सी डिलीट करनी है हमें? सर जो लास्ट में 19 है वो। 19 है ना, सो वी आर मेकिंग इट x एक्चुअली इन ऑर्डर टू डिलीट द नोड x. We are changing the pointer name only, that's it. और what you can do is also, आप यदि नहीं भी कर रहे हैं चेंज तो आप किसको डिलीट करेंगे? x सक्सेसर को डिलीट कर देंगे. यस सर, फिर हम x सक्सेसर को ही डिलीट करेंगे। डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, मैंने जो यहाँ लिखा था वो एक्चुअली ये था, इसका यूज तब हो सकता है जब आप ये करना चाहें, x इंफॉर्मेशन, सॉरी x इंफॉर्मेशन, नो सॉरी, x सक्सेसर इंफॉर्मेशन, x successor information is equals to x information. इसकी जगह ये वाला स्टेप हम लिख सकते हैं. Is it okay now? ये ऑप्शनल है, इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ. लाइक तो इसका क्या मतलब है कि ये अब मैं 19 ये क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 12 है ना, एंड देन आई नीड दिस स्टेप. सो एक्स सक्सेसर को आप इसको रिमूव कर दो डायरेक्टली, तो आप इसकी जगह वो भी कर सकते हो. और कोई क्वेश्चन? ओके। Anything else we want to discuss, or we should end up here? So this is what the deletion of a binary search tree. That is very important. Actually, deletion तीनों cases में पूछे जाते हैं. Numerically, if they ask, they like actually try to ask this one, that third case, because this third case includes first and second by default. Okay, so generally the question will be on the third case. तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि मुझे केस कौन सा पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एज वेल एज राइट द एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम जैसे मैंने लिखवाई है आपको यहाँ पर, दिस इज सफिशिएंट टू राइट, दैट इज द मेन लॉजिक एक्चुअली. ओके, नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप्स टू रीच एट दैट पॉइंट 6. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. व्हेन वी राइट द प्रोग्राम वी हैव टू राइट द स्टेप्स टू रीच एट 6, reach at 12. Okay, so that needs to be taken care. Reach at 4 in this case. तो वो कैसे करेंगे वो हमने इंसर्शन में देख लिया था यहाँ पर. That's why I have omitted that stretch. So we need not to write it again and again. Okay, so you just you just write that particular part of the logic that you need to implement. Simply consider the node as an x and you can write that code. So that is all for the insertion of binary search tree and deletion of binary search tree. Now we will move on to the next thing. That is next topic of the tree, that is threaded binary tree. So I am starting with the next one. Don't know आज ये हो क्या रहा है, बार बार स्लाइड्स क्यों ऑफ हो रही हैं? सर एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए शायद. So now let us start the next topic, that is threaded binary tree. Binary search tree we have completed. Okay, now threaded binary tree. That is again a very important concept. On which a short note, definitely the short note will be there. Okay, मैं क्वेश्चन का वे भी बताता हूँ आपको हमेशा, है ना, कि क्या इस पे छोटा क्वेश्चन बनता है हमेशा. तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थ्रेडेड बाइनरी ट्री? थ्रेड मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? थ्रेड्स, धागा होता है. वेरी गुड, धागा इन हिंदी, दैट इज वेरी करेक्ट. और थ्रेड धागा इज यूज्ड फॉर linking tool, we can say linking. Linking or connection. वेरी गुड. इन टेक्निकल टर्म्स इट इज लिंकिंग. सो एक्चुअली जो थ्रेड है या जो धागा है वो भी लिंकिंग के काम ही आता है. हम लिंक ही स्टैब्लिश करते हैं. ओके, दो चीजों को आपस में बांध दिया ऐसे करके. So Yes, sir, that is what the thread in technical terms also. Linking, for linking we use this particular term. Like in Java भी हम threads use करते हैं. So now binary tree में threading कैसे use होगी, that we will learn now. Look at that now. First of all, I want to give you the example of, or like the drawback of binary tree. This is a normal binary tree. First of all, tell me, is it a binary search tree? Yes sir. Is it a binary search tree? Yes sir. नो सर। Yes, कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था. सर एनी बाइनरी सर्च ट्री हो ना. बाइनरी सर्च ट्री में क्या ए का लेफ्ट चाइल्ड छोटा है उससे? No, sir, it is not binary No, search tree, sir. it is not sorted. It's not a binary search tree. It's simply a binary tree. बाइनरी ट्री है, सर्च ट्री नहीं है.
Okay, so now tell me, this is a full binary tree or complete binary tree? Yes, sir. Full binary tree. It's a full binary tree. Okay. Now the corresponding figure shows the linked list representation of the binary tree. Now tell me, just try to find out the total number of pointers in this. How many pointers we are using in this? Do it fast. In this 3, tree, in this 4, overall tree, how many total pointers we are using? 3, null, left or right. I'm not asking about the type of pointer. I am talking about the number of pointers we are using in this. How many pointers, total pointers are there in this tree? 14. 14. Very good. Total pointers are 14. Tell us how. Who is this? Sir, Dakshna. दक्ष बताइए कैसे बताए फटाफट बताइए जल्दी. Sir, every node has left and right Very good. pointers. So very good. There Every are node 7 has 2 pointers and overall we have 7 pointers. 7 nodes. So total कितने pointers हो गए? 14. 14. Very good. So now tell me how many of that are null? लीफ नोड के null होंगे. 8. 8 are null. और बाकी जो 8 null है और बाकी जो बचे 6 वो कुछ ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस. Left or right. वो किसी काम आ रहे हैं. लाइक इफ विल टॉक अबाउट ए, यदि हम बात करें अब ए बी सी, ये 3 ऐसी नोड्स हैं जिनके जो पॉइंटर्स है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहे हैं. दे हैव डिक्लेयर्ड एंड दे आर यूटिलाइजिंग. But these, for leaf nodes, all the pointers are null. So what is the use of these pointers? Null pointers. ऐसा क्या होता है जो कि हम pointers तो declare करते हैं लेकिन वो null होते हैं, कहीं utilization ही नहीं हो रहा है इनका. So what that particular term known. ऐसे pointers को क्या बोलते हैं हम लोग? Pointers have been declared but they are null. They are not being utilized anywhere. Can anybody tell me what we can say or call that kind of pointers? Null pointer or void pointer? No. सर ये कुछ एड्रेस ही कोड कर रहे हैं तो लीफ होंगे. चलो हम उस पर भी आएंगे. मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं. वो शायद धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा आपको. सो नाउ टेल मी, इज देयर एनी यूज ऑफ दीज 8 pointers? They are occupying spaces in the memory but they are not being utilized, so they are actually wasting our memory. So in order to use these pointers or in order to get some other benefits from these pointers, we will utilize these pointers. We will try to connect these pointers with some nodes in the tree so that the traversing could be fast, so that the reachability of the nodes could be more appropriately done. So we will use these null pointers somehow, and that particular trees that uses these pointers for pointing some other nodes in the trees are called threaded binary trees. Okay, so now look at that. In a linked representation of the binary tree, the total number of the null pointers, the number of null pointers are actually more than that of the non-null pointers. आपको ऊपर एग्जांपल मैंने सारे लिख दिया है इसमें, theoretically it is there. Total 8 null pointers and 6 pointers, 14 pointers are there. We can generalize it. That point is very important. We can generalize it for any binary tree with the n nodes, full binary tree, that there will be n plus 1 null pointers and 2n total pointers. So overall 2n pointers if they are there, so n plus 1 उसमें से null होंगे हमेशा in full binary tree. That is a big amount, like more than half pointers are null. So that is a very major drawback of the binary tree, simple binary tree. The objective here to make the effective use of these null pointers. Okay, somehow these particular scientists are proposed to make effective use these of null pointers. According to the idea, we are going to replace all null pointers by the appropriate pointer values called threads. And the binary tree with such pointers are known as the threaded binary tree. अब हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं ये देखते हैं. सेम एग्जांपल मैंने सर एक बात बताओ. हाँ बताओ. हेलो सर, ये लीफ नोड है, इनके जो नल पार्ट है इनमें पीछे के नोड का एड्रेस फिल कर दो तो हाँ वही करेंगे. हाँ वही करेंगे अभी हम. ओके, सो नाउ द नोड स्ट्रक्चर विल बी चेंज्ड. You just look at that structure. In this we have 3 parts of a node. Now in this we will have 5 parts. That is data, left child and right child remains as it is. We are basically we are including 2 more parts, that is left thread and the right thread. It means the node
or the node pointer of the node which they point, and the pointer of the node which that particular pointer will point. Okay, and in order to differentiate between these two pointer, because now ये भी pointer है, ये भी pointer है, so ये दोनों differentiate कैसे होंगे? हम एक एक्स्ट्रा टैग लगाएंगे. आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे हम ऑपरेशंस करते थे बाइनरी बिट्स के ऊपर, तो हम एक टैग फील्ड यूज किया करते थे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स. बता सकता है किसी को याद है वो कंसेप्ट? लाइक सपोज 5 है और -5 है, तो -5 को बाइनरी नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Signed and कॉम्प्लीमेंट ले unsigned. लेते हैं. एक एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं Yes, Carried. one and zero. 1 or 0, signed and one or zero, unsigned. sign and unsigned. Very good. So similarly here we will differentiate between the main pointer and thread pointer. So this left child and right child are the main pointers, but left thread and right threads are the thread pointers. So thread pointers को हम 1 से represent करेंगे. उसके संग हम एक्स्ट्रा टैग फील्ड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा बिट यूज करेंगे, जिसको हम 1, और नॉर्म जो मेन पॉइंटर है उसके लिए हम 0 यूज करेंगे. Okay, so theoretically we will differentiate likewise with like between these two pointers, main pointers और thread pointers. Now threading जो है वो दो तरह की होगी, one way threading and two way threading. Okay, and we will use here in order traversal for the threading. You may also use pre-order and post-order. Once you learn the in order traversal, you will be able to make it for any order traversal. Okay, so I will discuss the in order traversals for threading now. You will see how actually. So one way threading is nothing, but in this what we will do, hum right thread ko, just look at that. This is the same example I have used over there. मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं यहाँ से समझाता हूँ एक बार आपको. Every leaf node has two pointers, left and right. So in one way threading we will not touch the left pointer. हम लेफ्ट पॉइंटर को कुछ नहीं करने वाले, वन वे है इसलिए हम केवल एक पॉइंटर यूज करेंगे, एंड दैट पॉइंटर विल बी राइट पॉइंटर. सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताइए क्या होगा. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जल्दी बताइए. B, E, then A. वेरी गुड. F, E, C, G. वेरी गुड. वैसे ये बोर्ड यहाँ लिखा हुआ था स्क्रीन पे, इन ऑर्डर DBEAFCG. Okay, so now what we will do is, first of all we will find the in order traversal of this binary tree जिसकी हमें threading करनी है. Okay, now हम हर उस नोड के जो लीफ नोड है उसके राइट पॉइंटर को सर्च करेंगे. राइट पॉइंटर इट मींस की दिस वन. ओके, इसको हम यूज करेंगे. सो राइट पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. सो व्हाट इज द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ बी? इस डी का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? E, डी. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोड, लीफ नोड डी. डी फॉर B. डॉग. डॉग का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? Bat, B for bat. D. So D ka in order successor is B. So the right pointer of D will point to the B. It will not null now. It will point to B. Okay. Now come on to the E. What is the in order successor of E? A. So E A. ka right pointer will point to A node. A, What is the in order successor of F? C. C, So this will point to C. Okay. Now what is the in order successor of G? Null. No. कोई है ही So नहीं. it will remain as it is. So it remains null also. Okay, that is what the in one way threading actually. अभी समझ में आ गया आपको one way threading क्या है? हमने what we have done, I am repeating, we have find the in order successor of the tree, so in order traversal of the tree, and then we make the right pointers of the nodes. If it is null, we will replace by the in order successor of that node. Is it clear now? सर हम सक्सेसर का जैसे कि यहाँ पर Address आप रख देख रहे पा हैं. रहे हैं, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, I have made it D to B, E to A, and F to C. Rest all the remaining 5 pointers are still null, which are in blue now. अभी भी वो null हैं. So in one-way threading of the tree, a thread will appear to the right field of a node and will point to the next node in the in-order traversal of the tree. Is it okay? Any doubt or any question? So हमने कुछ पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर लिया एक्चुअली. अब ये पॉइंटर्स हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल हो गए, जिसको हमने
अब क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, क्या यूटिलाइजेशन हुआ एक्चुअली इसका, कैन एनीबॉडी टेल मी Sir, for यूटिलाइजेशन the क्या हुआ? deletion, सॉरी, डिलीशन के करने के लिए लिए. नहीं नहीं, डिलीशन करने के लिए क्यों, कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, बताइए कैसे? Sir, like at the time of deletion, we need the successive in order successive. If we know the address, then we can directly point to that. Okay, but like suppose if for in order successor, that for that particular deletion we have the node with 2 childs, but right now we are only talking about the leaf nodes that have only 0 childs. So we know the in order successor of that node that has 0 childs, but So in what you are reversing, talking about, sorry, reversing, रिवर्सिंग reversing means? पीछे की तरफ सर ट्रेवल्स कर सकेंगे अगर हमें Sir, we can easily traverse in order. It means we can easily traverse the in order Very of good, this binary. very good, ये बहुत अच्छा एक इन्होंने बताया। अब आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालिए, देखिए डी से कहाँ जाना है आपको पता है, the next pointer you know, from D you can directly move to B, when B to E, E to A to C, C to A to F, then F to C, C to G. Somehow it helps us to find out the in order successor travel very quickly. So इसमें हम बिना आइट्रेशन के और बिना लाइक रिकर्शन के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं। समझ में आ सर रहा है सबको? इसमें यस सर आ तो रहा है सर इसमें टाइम क्योंकि अब हर कॉम्प्लेक्सिटी नोड भी आपस में वेरी लिंक हो गई है। सो इन ऑर्डर सक्सेसर यदि आपने यूज किया है तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल काफी इजी हो जाएगी। इट विल नॉट रिक्वायर्ड एनी, इट इज जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। आपको हर नोड के बाद हर नोड का एड्रेस पता होगा। सर इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ेगा कुछ बल्कि यस ट्रेवर्सिंग पड़ेगा ट्रेवर्सिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, बल्कि इंसर्शन डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसके अंदर, अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट पॉइंटर विल ऑलवेज बी द नेक्स्ट नोड ऑफ द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब यदि इसमें आप प्री ऑर्डर लोगे तो प्री ऑर्डर को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, यदि आप पोस्ट ऑर्डर लोगे तो पोस्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? यू कैन टेक इट ऑल थ्री केसेस, थ्री ट्रेवर्सल्स। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द टू वे थ्रेडिंग। सो कैन एनीबॉडी गेस व्हाट कुड बी अ टू वे थ्रेडिंग? So we will include both right and left Very thread. good, very good, very good. So in that we will include both. Okay, two way and two way में हम right भी और left भी दोनों ही यूज करेंगे। So for D, अब इसमें हमने देखा था इन ऑर्डर सक्सेसर, अब राइट में हम जा रहे हैं तो इन ऑर्डर सक्सेसर देख रहे हैं, लेफ्ट में हम जाएंगे तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर देखेंगे। ओके, नाउ फॉर डी, दैट डॉट डी, डी का लेफ्ट क्या होगा? इन ऑर्डर में प्रीडिसेसर क्या है? नल, Null. इट विल नल। फॉर ई, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है? D. डी B. For E, predecessor is B. So you will point to B now. For F, it is ए A. So this will point to A. For G, it will be सी C. So it will point to C. So this will be this. ये इसका टू वे थ्रेडिंग हुआ। ये डायग्राम आप देखें, ब्लू जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं प्रीडिसेसर्स को, रेड जो एरोज हैं वो पॉइंट्स कर रहे हैं in order successor go. So in two-way threading of the tree, thread will appear in the right field of the node and will point to the next node in the in order successor, and also a thread will appear in the left field of the node and will point to the preceding node in the in order traversal of the tree. So right pointer next node in an order, and left pointer previous node in an order traversal. Is it okay? सर एक बार वन वे ट्रेवल थ्रेडिंग बताना दिखाना दो हाँ तो सर इसमें टू वे हमने अब, थ्रेडिंग काफी तो इसमें हमने और क्या किया, और सारे लगभग पॉइंटर हमने यूज कर लिए। Still 5 पॉइंटर्स यूटिलाइज कर लिए इसमें अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अभी दो पॉइंटर नल हैं, उसको भी हम रिमूव करेंगे किसी तरीके से। अब हम देखेंगे कैसे। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए। यस सर नो डाउट
अब आप देखो इसमें क्या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीटली बिना रिकर्शन और उसके हो सकती है? बैक रिवर्स भी देखिएगा आप, Yes, sir. है ना? So that is what one of the benefit of that. Now next one is how we can utilize these last two pointers, X and S. Now dangling pointer, नाम सुना है कभी dangling pointers का? नहीं तो सर कभी नहीं सुना। Say these are just the leaved pointers और जो खाली रह जाते हैं। हाँ, तो इनिशियली ये सारे पॉइंटर्स डैंगलिंग पॉइंटर्स थे जो नल थे. We have declared them pointers but we are not utilizing it, they are null. So all these pointers are dangling pointer. मैं जो टर्म बोल रहा था आपको वो dangling pointers ही थे. So we are trying to utilize these dangling pointer actually. So technically you should know that these kind of the pointers are also known as dangling pointers. Is it okay now? They have declared but they are still not being used. Null. So तो furthermore सर the ये खाली left रहेंगे pointer, सर? हाँ खाली अभी है, हम उसको आगे हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे. Furthermore, the left pointer of the first node and the last right pointer of the last node in order traversal will contains the null values. यदि आप प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे तो उसमें कुछ और होगा, ये आपके लिए खुद को करना पड़ेगा, ये मैं आपसे नेक्स्ट साल पूछूंगा. Will contain the null value with when tree does not have any header node. Now the new concept is over like coming here, that is header node. हम एक नया कंसेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर जो कि हेडर नोड का है. ठीक है. So in order to utilize these pointers, we will utilize we are trying to use one more node that is called header node. अब go back to linked list also. So linked list में हमने header linked list पढ़ी थी. Yes, sir. What was that header linked list? सर पढ़ी थी लास्ट Sir, में। it contains a head node. Head node. Then that head node contains what? So it contains some Method specific data. information regarding the linked list. Very good. It could be the total number of elements, it could be the maximum element, whatever it is, है ना? ऐसा कुछ हम कंटेन कर सकते हैं उसके लिए. Yes, sir. यस सर इंफॉर्मेशन थी। It has only one pointer or two pointers, whatever. What it could. Okay. So now similarly here we will have a header node actually. So this will be the structure of header node. इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. Header node है ये. Two-way threading with header node. इससे पहले हमने पढ़ी है a two-way threading without header node है. दोनों में डिफरेंस है. So please be careful when you are writing the answer in your question paper. क्या पूछा गया है two-way threading with header node और two-way threading without header node. So this is what the without header node. In without header node दो pointers जो first और last pointer होंगे वो null रहेंगे. ठीक है. But with header node they will not null. They will be pointing to the header node and the structure will be like this. Observe करो इसको ध्यान से क्या changes हैं यहाँ पर देखो. This is a header node now. ये मेरी header node है. Okay. ये header node का structure कैसा है? Same as that of the simple nodes. It has three parts. One is information part, one is left part, and one is right part. So you observe that left will always utilize. We are utilizing the left only, but we are not utilizing the right one. Right one will always be null, or it may also always point to itself only. क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी पॉइंटर नल नहीं रखेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये अपने आप को पॉइंट करेगा. दैट्स इट. So either it will be null or it will points to itself. In threading it will always points to itself. यदि हम normal tree की बात करेंगे तो it will be null. If I am talking about threading then it will point to itself. Difference समझ में आ रहा है आपको? यस सर आ तो रहा है। इसका तो एक कोई हमने यहाँ पर अब एक और नोड बनाई है. This is header node. This head node, sorry. Now instead of root now it is head. Normal binary tree में क्या होता था? Root होता था यहाँ पर. Root क्या करता है? It points to the first node. Yes or no? यस सर यहाँ पर नल की Now instead of root here we are having what? Head. So head will points to header node now. It will not point like in the linked list also. Head will point to the start. Sorry, start जो होता था वो head node का address contain करता था, है ना? Similarly यहाँ पर हम head root node या head node जो होगा मेरे लिए वो header node का head address contain करेगा. Header node में left pointer जो होगा वो
आपके जो फर्स्ट नोड है या रूट जो है ट्री का उसको पॉइंट करेगा. राइट पॉइंटर वो नल होगा if we are using normal binary tree, and if we are using threaded binary tree it will points to itself because it should not be null. In threading no pointer will be null actually. Okay, and same this particular value will may contains the total number of nodes, maximum of the nodes, height of the tree, depth of the tree, whatever, some information regarding that tree. Is it okay? It is okay, sir. But sir, space complexity तो इससे बढ़ गई ना. Obviously कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ तो ड्रॉबैक होंगे भी इसके भी. So the header node is containing two pointers. One is Left and pointing to itself and another is pointing to the leaf node. no, pointing to leaf node. Who says pointing to leaf node? मैंने कब कहा बेटा? Header No, node sir. header node contains two pointers. One is left and right. Left pointer will always point to the root node of the tree. Okay, and right Okay, pointer in case of normal binary tree it will be null, but in case of threaded binary tree it may points to itself. Itself. आपने देख मैंने अपने आप को लूप बनाया हुआ, देखिए आप, वो अपने आप को पॉइंट करेगा थ्रेडिंग के केस में, या तो ये नल होगा या फिर अपने आप को पॉइंट करेगा. अब मुझे बताइए कि बाइनरी ट्री यदि नल होता है या बाइनरी ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? Underflow. नहीं, कंडीशन क्या होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशन. Root equals to null. वेरी गुड. सो इन दैट केस व्हाट विल बी नल? If head equals to null. नो. Head right Very good. equals to null. No, head right will always Left, null. sorry, Head left. Head left. Head left equals to null. because the first node address is containing in the left of head node. Yes or no? Yes, sir. So instead Sir, of repeat, root, sir. equals to null, it will be head left is equals to null. क्योंकि रूट में क्या होता था? फर्स्ट नोड का एड्रेस हुआ करता था, सो वो नल होता था. यहाँ पर फर्स्ट नोड का एड्रेस इज इन द लेफ्ट ऑफ हेड नोड, सो वी विल से द हेड लेफ्ट इज नल. इट मींस की ट्री इज नल, नॉट हेड इज नल. अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हेड नल नहीं होगा क्योंकि हेड तो हेड को पॉइंट करेगा हमेशा. नल में भी कम से कम इतना स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा. नल ट्री में भी यदि हम हेडर ट्री की बात कर रहे हैं, हेडर नोड की बात कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रक्चर तो होना ही होना है. ये भी नल हो जाएगा उस केस में. So now header node, sometime a special node is added in the beginning of the tree. When this extra node is used, the tree pointer variables which will be called head instead of root will point to the header node. Okay, head we will use in that case. Header tree के लिए left pointer of the header node will point to the root of the tree, or we can say the first node of the tree, and right pointer of the header node is always null or point to itself. नल कब होगा और पॉइंट टू इटसेल्फ कब होगा, ये समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now if tree is empty it means head left is null, not head is equals to null. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. Now some comparison between threaded binary tree and normal binary tree. Sir, but it is written in the previous slide that head equals to null. हाँ लिखा है बेटा, not लिखा है मैंने, देखो not head not equals to. If the tree is empty then head left is null, not head is equals to null. इसको वैसे पढ़ना आप लोग, है ना? हेड नल नहीं होगा. Now threaded binary tree and normal binary tree comparison is there. In threaded binary tree the null pointers are used as a thread, but in normal binary tree they will remain null. That is the major benefit of this. We are trying to utilize this one. Now we can use these null pointers, which is efficient way to use the computer memory also. Like हमने मेमोरी यूटिलाइज तो करी है लेकिन उसका यूज नहीं किया. आपने यदि रेंट पे 4 कमरे ले लिए लेकिन यूज तो एक ही कमरा कर रहे हो, लेकिन किराया तो आप 4 कमरों का दे रहे हो. So what is the utilization of that? That is what they actually say. कैसे आएंगे सर? है ना? We cannot use the null pointer, so it is a wastage of memory. If you dangling pointer use करना तो wastage ही होता है. That's why. Now traversal is easy, completed without using stack or recursion. ये मैंने अभी बताया आपको, हमने देखा भी था, दक्षिण में बताया. Traversal is not easy because it required some kind of recursion and something likewise. Structure obviously complex है threaded binary tree का, which could be a drawback of this. Structure complex है, and
iteration, insertion and deletion will take more time in that case, because here we need to maintain multiple pointers. हमें बहुत सारे pointers maintain करने पड़ेंगे यहाँ पे. Is it okay? So that is what about the threaded binary tree. Now I think you are able to write some short note on that, and I think आप समझ चुके. इसको program बनाने की हमें जरूरत नहीं है अभी, but the concept we need to understand that. Is it okay? Anything you want to ask in this? सर एक डाउट है सर. सर इसमें अब रूट नोड तो वही रहेगा या उसका रूट कुछ नोड अलग? वही है. रूट नोड वही है. रूट नोड ए ही है हमेशा. हेडर नोड में रूट नोड वही है. ए इज अ रूट नोड, बट हम पॉइंट किसी तरीके से और तरीके से कर रहे हैं इसको. इनडायरेक्टली. So anything else you want to ask? So today we have studied about the deletion of binary search tree, and then we have discussed about the threading in the binary trees. What are the utilities or advantages of threading in binary trees? How it can be done, one way and two way, using in order. You can do it on your own for pre-order and post-order. Okay. And now in next class we will start the next tree, that is AVL tree. Thank you very much. If you want to ask anything, you can ask. Otherwise, we can end the meeting. Thank you, sir. Okay. Thank you very much.